Excellencies, the evolving global land interdependence and expanding frontiers of knowledge has made regional cooperation all the more essential for dealing emerging challenges, bridging economic divides, and unlocking shared prosperity. Within this context, the Economic Cooperation Organization represents our best hope, and Pakistan is proud partner with its brotherly member states in these collective endeavors. Mr. Chairman, the focus of the 17th ECO Summit, New ECO Vision for a Sustainable and Climate Resilient Future, is both timely and extremely important. Like the rest of the world, ECO member states are facing far-reaching impacts of climate change, from melting glaciers, desertification, extreme heat waves, devastating floods, and declining agriculture productivity. These challenges threaten the food security and livelihoods of millions of our people. Pakistan remains among the top 10 countries that are most vulnerable to climate change. In 2022, we confronted floods of biblical proportions, which were the most dreadful manifestation of a climate-induced disaster. Over 33 million people were affected across Pakistan, with loss of life, huge damage to livelihoods, and critical infrastructure badly damaged. Flash floods continue to wreak heartbreaking devastation in Pakistan. Just last week, several lives were tragically lost in the affected districts of Pakistan. For my country and many others which have suffered similar catastrophic losses, a crisis of accelerated vulnerability now defines our existence. Excellencies, Pakistan on its part has undertaken a series of climate-related policy initiatives and is aggressively pursuing a 4F plan focusing on resilience, recovery, rehabilitation, and reconstruction. The success of this model offers valuable lessons to all of us. Ladies and gentlemen, in this regard, Pakistan proposes the development of low-emission corridors, an ECO-wide carbon market platform, and regional disaster resilience systems. A dedicated framework to mobilize climate finance along with regional clean energy corridors and ecotourism initiatives can further drive inclusive, sustainable growth, creating green jobs, especially for youth and women, and supporting livelihoods in vulnerable regions. My dear brothers and sisters, forces of instability and chaos continue to destabilize our region for their own geopolitical agendas. The unlawful, unjustified, and uncalled for Israeli attack on Iran, a brotherly country and fellow ECO member state, were the most recent manifestation of this dangerous trend. Pakistan strongly condemns this act of Israeli aggression against Iran, and I offer my deepest condolences and very strong condemnation of this aggression, those martyrs who were killed by Israeli aggression.
May Allah grant them place in Jannah, and we pray for the speedy recovery of injured brothers and sisters in Iran. Ladies and gentlemen, the unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan after an unfortunate incident in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir was yet another attempt to destabilize regional peace. The world witnessed the steadfast resolve of our valiant armed forces under the able leadership of the Field Marshal Syed Asim Munir and the unyielding spirit of our resilient people who stood firm in the face of provocation and responded with exemplary courage and professionalism. I take this opportunity to appreciate the support and solidarity extended to Pakistan by the brotherly ECU member states in the aftermath of India's aggression earlier this year. Excellencies, unfortunately, the world has been witnessing an unprecedented man-made catastrophe in Gaza, a region that has descended into an abyss of perpetual suffering. It is as if humanity no longer exists while famine looms large. Humanitarian workers, including UN personnel, are being attacked by Israel with impunity to deliberately cut off the only lifeline of the helpless and starving people of Gaza. Ladies and gentlemen, Pakistan stands firmly against those who perpetrate barbaric acts against innocent people anywhere in the world, whether in Gaza or Indian illegally occupied Jammu and Kashmir or Iran. Distinguished delegates, while the threat of natural climate-induced changes remains formidable, we are now witnessing a new and alarming trend with India's weaponization of water. India's illegal attempt to defy the World Bank negotiated Indus Water Treaty, as well as its blatant disregard for the recent ruling of the Permanent Court of Arbitration, are completely unacceptable and we reject it with contempt. Waters of the Indus are the lifeline for Pakistan's 240 million people. Under no circumstances can India be permitted to pursue this dangerous path that will amount to an act of aggression against the people of Pakistan. Honorable heads of delegation, promotion of trade and investment holds the key to securing our common goals for strengthening regional connectivity, commencement of major ECO transport corridors, and as it was said here earlier on, that ECO was previously RCD, a regional cooperation development between Turkey, Iran, and Pakistan. And this treaty was signed back in 60s, I believe. ECO transport corridors, ensuring energy security, promoting intra-regional tourism and economic growth and productivity. These elements were envisaged and agreed upon as the ECO Vision 2025 during the 13th ECO Summit at Islamabad in March 2017. In this regard, the ECO Trade Agreement was visualized as a landmark intra-regional trade agreement. However, despite the passage of a considerable period, it is yet to be implemented. Excellencies,
heirs to the proud legacy of the ancient and well-established Silk Route, which nurtured rich and industrious civilizations, the great ECO region must build on this historic synergy to shape a better future. I thank all member states for their support in designating Lahore a confluence of history, culture, and cuisine as the ECO tourism capital for the year 2027. I assure you that Lahore, Pakistan's cultural heart, will enthrall all those who will visit us, and I extend a very warm invitation to you all. I also congratulate Turkmenistan and Kyrgyzstan on the selection of Mary and Korakol as ECO tourism capitals for the year 2028 and 2029, respectively. Ladies and gentlemen, to conclude, as members of the ECO family, sharing strong commonalities of history and geography, of faith and culture, we have a firm basis for lasting cooperative relationship. We are endowed with rich resources and, most importantly, the expectation of our 566 million hard-working and talented people to visualize ECO as a credible vehicle of regional integration. In this regard, Pakistan supports Uzbekistan's proposal for strategic objectives of cooperation 2035 as a step in the right direction. Let us resolve to enhance our solidarity and cooperation, accept the global challenges, and channel our collective energies towards a future that guarantees our people's a life of peace, progress, and prosperity. I thank you all. इक़्तिसादी ताउन तंजीम का 17वां सरबराह इजलास वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे थे। बेहतरीन मेज़बानी और इजलास के कामयाब इनेकाद पर सदर इल्हाम अलीयौफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बतौर चेयरमैन ECO काज़किस्तान के सदर ने अहम खिदमात अंजाम दी। आलमी मंजरनामे पर टेक्नोलॉजी की तब्दीलियाँ तेज़ी से रूनुमा हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 17वें इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बढ़ते हुए बाहमी इन्हिसार और इल्म की वुसअत का नया दौर शुरू हो रहा है। तरक्की के अमल में रुकन मुल्कों के साथ इज्तमाई काबिशों में शरीक होने पर फ़ख्र है। समिट का मौजू पायदार और मौसमियाती लिहाज से मजबूत मुस्तकबिल बहुत मुनासिब और बर वक्त है। ECO रुकन मुल्कों को भी मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। पिघलते ग्लेशियर्स, शदीद गर्मी, तबाहकुन सैलाब और दीगर चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि 2022 में भी पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाब का सामना किया। बहाली और तामीर नौ के लिए 4 नुकाती प्लान पर तवज्जो मरकूज़ है। तमाम इशूज़ और पायदार नमू के लिए मौसमियाती फनांसिंग फ़ाल करना बहुत अहम है। बदअमनी पैदा करने वाली कुव्वतें ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं। ईरान पर इसराइली गैर कानूनी हमले इस रुझान का हालिया मज़हर हैं। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 17वें सरबराह इजलास से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। बड़ा मुदल्लल उनका खिताब था और समिट का मौजू पायदार और मौसमियाती लिहाज से मजबूत मुस्तकबिल बहुत मुनासिब और बर वक्त है, ऐसा कहना था वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का। उनका कहना था कि ECO मुल्कों को भी मौसमियाती तब्दीलियों के गहरे असरात का सामना है। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि पिघलते ग्लेशियर, शदीद गर्मी, तबाहकुन सैलाब और दीगर चैलेंजेस का सामना है। 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। अमलाक को नुकसान पहुँचा है। फ्लैश फ्लडिंग भी दिल दहला देने वाली तबाही मचाती है। गुज़िश्ता हफ्ते मुतासरा अज़लाम में कई कीमती जानों का नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि फ्लैश फ्लड्स जैसी सूरत हाल के तनाजुर में इक़दाम करना वक्त का तकाजा भी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पॉलिसी वज़ा की है।
बहाली और तामीर नौ के लिए 4 निकाती प्लान पर तवज्जो मरकूज है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश चैलेंजेस इज्तिमाई इक़दाम के मुत्तकाज़ी हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए कुछ तजावीज़ भी पेश की। उन्होंने कहा कि कार्बन अखराज में कमी, कार्बन मार्केट प्लेटफॉर्म और मज़ाहमती निज़ाम की तजवीज़ भी उन्होंने सामने रखी। उन्होंने कहा कि पायदार नमू के लिए मौसमियाती फाइनेंसिंग का फाल होना भी बहुत अहम है। मज़ीद कहा कि तवानाई कॉरिडोर्स और इको टूरिज्म के लिए इक़दाम भी तेज़ करना होंगे। मजीद उनका कहना था कि बदअमनी पैदा करने वाली कुव्वतें अपने मकासद के लिए खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं। ईरान पर गैर कानूनी और गैर मंतकी इसराइली हमले इस रुझान का वाज़ेह सबूत भी हैं। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि बैरूनी जारहियत के शोले ने जनूबी एशिया को अपनी लपेट में लेने का खतरा पैदा कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में एक बदकिस्मत वाक़े के बाद भारत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। भारतीय इक़दाम का मकसद इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाना था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया ने हमारे अवाम और बहादुर अफवाज के पुख्ता आज़म का मुशाहिदा किया। अफवाज पाकिस्तान ने मिसाली जुर्रत, पेशावराना महारत के साथ इश्तियाल अंगेजी का जवाब दिया। भारतीय जारहियत के बाद ईसीओ मुल्कों की जानिब से पाकिस्तान के साथ यकजहती पर मशकूर हैं। गजा को तबाही का सामना है, लगता है वहाँ इंसानियत का वजूद ही नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कह साली की सूरत हाल, फाका कशी, इमदादी कारकुनों पर इसराइली हमले जारी हैं। पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी बेगुनाह लोगों पर बर्बरियत करने वालों के खिलाफ खड़ा है। जी बिल्कुल। और मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बात की कि मकबूजा कश्मीर में सिर्फ एक बदकिस्मत वाक़े के बाद भारत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान पर जारहियत की। भारतीय इक़दाम का मकसद इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाना था। जो सूरत हाल थी उस हवाले से भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाहमी तौर पर एक बड़ा मुदल्लिल और बड़ा जामे खिताब किया और ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता भारतीय जारहियत है जिस पर पाकिस्तान पर जो है वो हमला किया गया और साथ साथ फिर आबी जारहियत के हवाले से बातचीत की गई, तो वो नुकता भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बड़े मुदल्लिल और जामे अंदाज में उठाया। साथ ही साथ मौसमियाती तब्दीलियाँ जिसके हवाले से पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन और गैर मामूली सैलाबों का सामना करना पड़ा, उस पर भी बातचीत की और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इसकी बहाली और तामीर नौ के लिए 4 नुकाती प्लान पर हम तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। पायदार नमू के लिए मौसमियाती फाइनेंसिंग जो है उसका फ़ाल किया जाना बहुत अहम है। और अगर इस हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान जो है मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा पहले 10 मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है, जबकि कार्बन अखराज के हवाले से अगर हम बात करते हैं या मौसमियाती तब्दीलियों का महरकात बनने वाले उन अवामिल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो ना होने के बराबर है। लेकिन जो इसका नुकसान है उसको भुगतने के हवाले से पाकिस्तान जो है उन पहले 10 ममालिक में शामिल है जो बराह रास्त मुतासिर होते हैं। और इसी नुक्ते के पेश नज़र वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज के इस अहम इजलास में पायदार नमू के लिए जो मौसमियाती फाइनेंसिंग है उसको फ़ाल करने के हवाले से बड़ा जो है वो अहम पॉइंट उठाया है। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आगा मसूद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। साथ साथ जो दीगर अहम नुकात हैं उन पर भी हम बात करेंगे। गज़ा के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। अमन के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पैगाम दिया कि हम जारहियत के ख़िलाफ़ हैं। दुनिया में वो कोई भी किसी के ख़िलाफ़ भी करे, गैर कानूनी तौर पर और गैर अखलाक़ी तौर पर आलमी क़वानीन को पामाल करती हुई जो जारहियत है हम हमेशा उसकी मज़म्मत करते हैं। और साथ साथ ये है कि हम अमन के दाई हैं। आगा मसूद खालिद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आगा मसूद, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खिताब यकीनन आपने देखा और सुना भी होगा, बड़े अहम नुकात उठाए हैं, बड़ी मुदल्लिल और बड़ी कंप्रिहेंसिव उनकी ये स्पीच थी। किस तरह से देखते हैं इन उठाए गए नुकात को और इनका पोटेंशियल आगे फ्यूचर में कितना अमल दरामद होगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम का जो 17वां सरबराह इजलास है उससे खिताब किया है। इंतहाई अहमियत नौयत का ये खिताब है और इसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो आलमी अमूर हैं और ख़ित्ते के मसाइल हैं उनके हवाले से अपना मौक़िफ़ और पाकिस्तान का जो विज़न है उसका उन्होंने अहाता किया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में जो ECO समिट की जो कामयाब मेज़बानी है सबसे पहले उस पर उन्होंने सदर इल्हाम अलीयॉफ को जो है मुबारकबाद पेश की और उन्होंने ये कहा कि खानकंदी का जो तारीख़ी और खूबसूरत शहर है उसमें पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म का ये कहना था कि बतौर चेयरमैन ECO काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमात ने जो अहम खिदमात अंजाम दी हैं वो भी काबिल सताइश हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म का अपने खिताब में कहना था कि जो आलमी मंजरनामा है इसमें जो तकनीकी तब्दीलियाँ हैं वो बड़ी तेज़ी से रूनमा हो रही हैं और जो तमाम खित्ते के ममालिक हैं उन्हें अहद हाजिर के तकाज़ों से नबरदाज़मा होने के लिए इन जो तकनीकी तब्दीलियाँ हैं इन पर जो है अपनी जो मज़ीद फोकस बढ़ाना होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बढ़ते हुए बाहमी इन्हिसार और जो
علم کی جو وسعت ہے اس کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، اور اس میں یہ جو پلیٹ فارم ہے اقتصادی تعاون تنظیم کا نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں تمام جو رکن ملک ہیں وہ اس بات پر فوکس ہیں کہ اس حوالے سے جو مختلف شعبے ہیں جس میں مزید جو تعاون ہے اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اس پر نئے امکانات کی جو ہے اس کے لیے بھی تعاون کو مزید بڑھایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ علاقائی تعاون اور مشترکہ جو خوشحالی کے لیے جو اہداف ہیں اس میں بھی جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہے وہ وزیر اعظم نے کہا کہ ناگزیر ہے، اور ترقی کے عمل میں جو رکن ملک ہیں ان کے ساتھ جو ان کی جو اجتماعی کوششیں ہیں اور جو مشترکہ کوششیں ہیں وہ جو ہے قابل فخر ہیں، اور اس میں مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سمٹ کا جو موضوع ہے جو پائیدار اور موسمیاتی لحاظ سے مضبوط مستقبل بہت مناسب اور بر وقت ہے، اور اس موقع پر انہوں نے اس بات کو ایک بار پھر باور کرایا کہ پاکستان ان 10 ملکوں میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور پاکستان متواتر اس بات کو مختلف پلیٹ فارمز پر اجاگر کر رہا ہے کہ یہ جو پگھلتے ہوئے گلیشیئرز ہیں، شدید گرمی ہیں، تباہ کن سیلاب ہیں، یہ تمام وہ مشترکہ چیلنجز ہے جس کا مل کر مقابلہ کرنا ہے، اور ایسے ملک جو اس کا سامنا کر رہے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے ان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے جو ماحولیاتی چیلنجز ہیں اس کا انہوں نے ایک دفعہ اس کو پھر اجاگر کیا، اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو لاکھوں افراد ہیں ان کو غذائی جو ان کی سلامتی ہے اور روزگار کا جو خطرہ ہے اس سے بھی وہ دوچار ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جو رکن ملک ہیں ان کو مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ رکن ملکوں کو مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آغا مسعود خالد آپ کا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے آج اقتصادی تعاون تنظیم کے 17ویں سربراہ اجلاس کے حوالے سے چیدہ نکات پر روشنی ڈالنے کے لیے بڑی زبردست ہمارا ان کی سپیچ تھی، بڑے جامع انداز میں جو ہے وہ ان تمام مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے جو نہ صرف پاکستان کو درپیش ہیں بلکہ عالمی دنیا کے لیے بھی وقت کی اہم